Hello students of class 5. Welcome to the digital class of Dipti Visual School. Today our subject is history. Chapter 17, that is our chapter name, Some People Never Die. Okay, so this is our topic. In this topic we will discuss many things, and our topics in this chapter we have the topics like earlier we did about Mother Teresa. Now today we will discuss about these topics like Amartya Sen, APJ Abdul Kalam and Sonal Mansingh. These are the three topics on which we will discuss our classroom, our study. Okay. First, here it is Amartya Sen. About Amartya Sen we will discuss. Okay. Let's see what is there in your book. Page number 107. Take out your page and take out page number 107 over there. There we have what? Amartya Sen, that topic. Okay, go to that topic. There we have. Let's restart our topic. Okay. So, Amartya Sen. Nobel laureate Amartya Sen is internationally acclaimed economist who works for overall development of people. That means he was a laureate, जो कि हम लोग बोलते हैं कि पुरस्कृत व्यक्ति जिसको सम्मानित किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉरेट. ओके, सो ही वाज टोटली उनको सम्मानित किया गया है इन बहुत सारे क्षेत्रों में, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में. ओके, सो ही वाज बोर्न एट शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल on November 3, 1933 to Professor Ashutosh Sen and Amita Sen. Okay, so let's see the next para where it is written he made great contribution in which field he made contribution. See that in the field of welfare and development economics. So here it is given development means viksit. Okay, viksit karna. Okay, so economics, he was the pioneer in the field of human rights including fundamental freedoms. So here it is the word came pioneer. Pioneer means that is he was the first one who got the he got the fundamental rights to, जिसको हम लोग बोलेंगे फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए वही जो थे पहले आए थे. ठीक है, सो ही emphasized, here it is given emphasize that is the अच्छा one more thing, fundamental freedoms means what? It means मौलिक अधिकार. in हिंदी we call it मौलिक अधिकार. ओके, जो हमें भारतीय होने के साथ साथ हमारे संविधान अनुसार हमें मौलिक राइट यानी कि मौलिक अधिकार मिलता है. ओके, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीडम. ही emphasized on development by improvement of health and well-being of people, including what? Including here it is given emphasize means जोर देना. ओके, जोर देना. Okay, so here people including food, clothing, housing, medical care and free and compulsory elementary education. Elementary education which is प्राइमरी लेवल ऑफ, इसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा. ओके, सो एजुकेशन इन ऑर्डर टू एंड पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड स्टार्वेशन. हियर इट इज गिवन डिप्राइवेशन मतलब होता है हानि या क्षय लोगों का होता है तो उस क्षेत्र में उनको देखना. ओके, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी से जो लोग सफर करते हैं उन लोगों को हेल्प करना, तो इसे हम लोग बोलेंगे
this book and this book won him what? Nobel Prize in the year of 1998. Okay, now this is all about Amartya Sen. Now we will proceed to our next topic, that is APJ Abdul Kalam. Okay, so APJ Abdul Kalam. Let me proceed there. APJ Abdul Kalam here, his full name Dr. Abul Pakir Jainullahdin Abdul Kalam became the 11th president of our India. Okay, so he was born to Jainullahdin and Ashia Ma on October 15, 1931 at where Rameshwaram in Tamil Nadu. Okay, so he came from which family? He came from an underprivileged family where the income was meager and insufficient here. Underprivileged मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसे कहा जाता है? जो लोग गरीब घर से आते हैं, एकदम पुअर फैमिली से आते हैं, ठीक है? And here it is given that one word that is meager, that is अल्प, okay, थोड़ा, that is little and scanty, इसको हम लोग भी बोलते हैं. So insufficient मतलब जहाँ पर नहीं, मतलब उनके फैमिली में insufficient चीजें रहती थी, जैसे फैमिली में इनकम बहुत कम था. Okay, so in his childhood he took up odd jobs to suffice the family income. He never worked at the cost of his studies. Okay, so अपना पढ़ाई के बदले वो अपने पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे, दूसरे काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जितना इम्पोर्टेंस अपने पढ़ाई को देते थे. ठीक है. In 1954 he graduated in science from St. Joseph College, that is Trichy. उसको हम लोग बोलेंगे it is an old city in Tamil Nadu. Okay, जिसको हम लोग उसका नाम पूरा नाम है तिरुचिरापल्ली. Okay, he became a full-fledged or aeronautical engineer from Madras Institute of Technology in 1957. Okay, वो aeronautical engineer बने कब? 1957 में. Okay, now here it is given. He played an eminent role in developing अग्नि, यानी कि उन्होंने जो मिसाइल्स बनाए उसका नाम क्या है? अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स. क्या बनाए उन्होंने? अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स बनाए. He became very much popular as the missile man of India. Okay, he also known as the missile man of India. उनको उनके नाम से जाना जाता है. कौन सा नाम से जाना जाता है? The missile man of India. He successfully made Pokhran second nuclear test. पोखरण जैसलमेर में है, जो कि हमारे राजस्थान स्टेट में है. कौन से स्टेट में है? राजस्थान में है. जहाँ पर पोखरण जगह है, उस जगह में जितने हमारे भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट वहाँ पर हुआ. He won many laurels in India. Laurels मतलब होता है honor in India and abroad. He was honored with भारत रत्न अवार्ड. उनको कौन सा अवार्ड मिला? भारत रत्न अवार्ड. Besides other Padma awards, और उनको साथ में पद्मा अवार्ड्स भी मिले. Being the most distinguished scientist of India, he is the recipient of honorary doctorates from 48 university doctorate scheme. He was well known as the, उनको पता मतलब वो सब में जाने जाते हैं कैसे कि the people's president, not only during his tenure from 2002 to 2007, मतलब वो जब 2002 से 7 तक के टेन्योर में नहीं बल्कि उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते थे. ओके, he was a father figure for youth and people. वो एकदम father figure के थे. ओके, and abroad him people still adored him. Adored means स्नेह करते थे. Him with great reverence. He had addressed various educational institutions to foster मतलब होता है जहाँ पर adoption करना. जैसे कोई पुअर होता है, किसी गैर बच्चे को अपनाकर उसको
उसका पालन पोषण करना, उसको पढ़ाई लिखाई से वंचित ना रखना, यानी कि उनको उसको पढ़ाई लिखाई से अवगत कराना। ओके, तो उसे हम लोग बोलेंगे फोस्टर द स्पिरिट ऑफ नेशन बिल्डिंग अमंग चिल्ड्रन एंड यूथ्स, यानी कि नेशन को कैसे बिल्डिंग करना है, जैसे राष्ट्र स्तर पर एंड चिल्ड्रन और यूथ्स को कैसे प्रभावित करना है, यानी कि उनको कैसे डेवलपमेंट के लिए उनको प्रोत्साहित करना। He passed away on July 2015 while addressing the IIM students at Shillong. शिलोंग में एड्रेस कर रहे थे जब IIM स्टूडेंट्स को, वहाँ पर ही उनको एड्रेसिंग करते करते ही वो पास अवे हुए, वहाँ पर ही उनका एक्सपायर हुए। Now this is all about APJ Abdul Kalam. Okay, now our topic is Sonal Mansingh. Sonal Mansingh, she is a classical dancer. Sonal Mansingh was born on May 1, 1944 in Mumbai to whom Arvind and Purnima Pakwasa, and her grandfather was a great freedom fighter. Her parents boosted मतलब होता है encouraged her, okay, a talent of dancing at an early age. She learned Manipuri dance, Bharatanatyam, Chau and Odissi from various illustrious gurus. Okay, यानी कि here it is given illustrious, यानी कि यहाँ पर famous, successful, प्रसिद्ध, सफल, ये सारे words आप use कर सकते हो instead of illustrious. Okay, so her dancing career bloomed, यानी कि from here it is from the height with her performance on many Indian classics, including जैसे कौन-कौन से classics है Indian classics, those are Sannyasi, Upagupta, Meghadutam, Kumara Sambhavam and Draupadi. These are the Indian classical dance performances done by Sonal Mansingh. Okay, and now she is also a choreographer. She works into the field like Astanayika, Indradhanush, Devi Durga, Atmayan, Mera Bharat and Sabrats. Okay, in this field she choreographed her works in the form of dance. Now, she was conferred here, the meaning here it is given, presented several awards and honors for deserving the award. Okay, like Rajiv Gandhi Excellence Award, Padma Awards, Kalidas Samman and the Medal of Friendship from the Council of the States of Cuba were most prominent among them. She is the founder, यानी कि इनको इतने सारे अवार्ड्स उन्होंने क्या किया, टोटली इनको प्रिजर्व किए. ओके, सो she is the founder of Center of Indian Classical Dances, in short we call it CICD. Okay, in 1977 इसका नाम दिया गया, उन्होंने ही उसका स्थापक मतलब सोनल मानसिंह जो है उन्होंने ही इसका स्थापना की. ओके, एंड स्टिल फोस्टर्स दिस कल्चरल, फोस्टर्स मतलब इसको अभी भी बढ़ाया जा रहा है. ओके, फोस्टर्स दिस कल्चरल लीगेसी अमंग यंगर जनरेशन. ये धीरे धीरे ये डेवलप किया जा रहा है अमंग किनके अंदर ये डेवलप किया जा रहा है, जैसे हम लोग बोलेंगे अमंग आवर generation, जो present generation and future generation. Okay, so this is all about our topic Amartya Sen, APJ Abdul Kalam and Mansingh. So this was the explanation of this chapter. Now let's we move to the next part, that is our, okay, let's we do homework here.